instruments of monetary policy. We have already understood uh, what is the components of money supply. So now we want to understand how this money supply can be fluctuated, right? And that is where we go ahead and we talk about the instruments of monetary policy. Before we go into the into the course today, I will first list down few questions for you to practice after we have covered this topic. So once you understand this topic, you should be able to go ahead and answer questions like this. Explain the significance of open market operations OMOs as a tool of monetary policy in India. How have they emerged to meet contemporary macroeconomic challenges? Right. This kind of questions you should be able to answer. Another question you can write down. Assess the constraints faced by monetary policy in promoting inclusive growth. In promoting inclusive growth, what reforms are necessary to enhance its effectiveness in this domain? Right. So you should be able to answer questions on monetary policy in India. Okay. Now what will happen is, जैसे यहाँ पे बोल दिया ना, explain the significance of open market operation. Instead of open market operation, you can just keep changing uh, to different cases, and you should be able to still answer those, right? Mane, what does that mean? It means that if I go ahead and if I rewrite this question, right, I can just substitute open market operations with any other instrument, right? So explain the significance of, suppose, standing deposit facility, right, as a tool of monetary policy in India. So any tool, if I just replace that, you should be able to answer it. That's what the point is, right? Okay. One last important question better from this topic is write down. Very, very important. Analyze the importance of coordinated action between fiscal
and monetary authorities in achieving macroeconomic stability, right? And substantiate with recent policy experiences in India. So these are few of the questions that can be asked from this topic. And once we finish off this topic, it will be a good idea if you can go ahead and you can write answers to these questions. It will be a good practice session for all of you. Okay. Okay. Now let us go ahead and let us talk about the instruments of monetary policy in India. Whenever we go ahead and we talk about instruments in monetary policy, जब भी बेटा हम instruments की बात करते हैं monetary policy के, we need to understand that there can be multiple instruments, right? We can have quantitative instruments, qualitative instruments, or market-based and hybrid instruments, right? So we can have all these kind of instruments. But the question is, why, first of all, what is money management and why it is required? So money management basically क्या होता है that whenever we have to go ahead and whenever we have to understand what will be the amount of supply of money that the RBI will be deciding, that is basically called as monetary management. ठीक है? In a way, regulation of money supply कि कितना पैसा इकोनॉमी में रहना चाहिए, कितना हम लोन दे सकते हैं, किस इंटरेस्ट पे इकोनॉमी काम कर सकती है, जब हम ये सारी चीजें डिटरमाइन करते हैं तो उसी को हम मनी मैनेजमेंट बोलते हैं. किसी भी कंट्री में जो ये मॉनेटरी मैनेजमेंट है, द मॉनेटरी मैनेजमेंट, इट इज डन बाय रिजर्व, इट्स डन बाय द सेंट्रल बैंक. इन इंडिया ऑफ कोर्स सिंस द सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, तो इंडिया में यही चीज जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, राइट? नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? This money management is important because it helps us to understand the price stability. अगर प्राइस कभी बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो या डिफ्लेट हो तो, या रिसेशन या डिप्रेशन, हम बिजनेस साइकिल की किसी एस्पेक्ट पे है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर हमें चाहिए, या अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करना है, या अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना है, टू अचीव एनी ऑफ दीज टास्क, if we have to go through the RBI route, it means we will be going through the monetary policy route. हम monetary policy route के थ्रू जाएंगे, right? Now, जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो बेसिकली एक मिक्स ऑफ तीन तरीके की पॉलिसीज को, तीन तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, तीन तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर रहे हैं. ठीक है? एंड कब कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे, विच इंस्ट्रूमेंट वी विल बी यूजिंग व्हेन, it will depend on the institutional capacity, market development and global economic conditions. वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे आरबीआई के पास कितना फ्रीडम है, कितना ईज है यूज करने का मॉनेटरी पॉलिसी को. इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन क्या जो मैं इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही हूँ उसकी मार्केट उतनी डेवलप्ड है या नहीं है. एंड इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री की, कंट्री के उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे हैं, right? So these are basically your the basics of your instruments, right? So please write it with me, beta. Introduction. जितना ज्यादा you will write, उतना ज्यादा it will stay in your mind, right? It is all about writing and practicing. Monetary management refers to the regulation of money supply, credit, and interest rate
by countries central bank with primary objective of maintaining macroeconomic stability. तो मॉनेटरी मैनेजमेंट का क्या एम है? व्हाट इज मॉनेटरी मैनेजमेंट? बेसिकली मॉनेटरी मैनेजमेंट का मतलब ही है कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितना मनी सप्लाई इकोनॉमी में रखेंगे, हाउ मच मनी सप्लाई वी विल कीप इन द इकोनॉमी, एंड व्हाई डू वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ मच मनी सप्लाई कीप इन द इकोनॉमी, so that one can and we can understand the country कि हम स्टेबिलिटी कैसे अटेन कर सकते हैं। बट फर्दर स्टेबिलिटी क्या है? मतलब स्टडी स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हमें जानना है कि हाउ मच इन्फ्लेशन वी कैन कीप इन द कंट्री, वी वांट टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द कंट्री, वी वांट टू डू इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। तो ये सारे पर्पस को अचीव करने के लिए, ओवरऑल एक स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए मॉनेटरी मैनेजमेंट जरूरी है। वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ मच मनी सप्लाई शुड बी देयर इन द कंट्री। इन इंडिया, the Reserve Bank of India, RBI, is entrusted with this responsibility. तो बेटा ये ध्यान से समझ लो कि whenever we talk about fiscal policy, that means we are talking about government. Whenever we talk about monetary policy, it means we are talking about central bank. In India, it means we are talking about RBI. ठीक है? Its overarching goal includes price stability, then it includes financial stability, full employment, economic growth, and external sector equilibrium. तो बेसिकली हम क्या क्या अचीव करें, क्या क्या रूल्स है आरबीआई के? ऑल दीज आर द रूल्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल दीज, राइट? द सेंट्रल बैंक employs a mix of qualitative, quantitative, and hybrid instruments. I will talk about all these. For effective monetary governance. For effective monetary governance. ठीक है? ठीक है. Now let us go ahead and let us talk about the first kind of instruments that we have, and that is basically your qualitative instruments. ठीक है? Now, before I teach you that, I want to highlight one thing. Whenever we understand any concept, तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई भी पेपर हमें मिल जाए, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई स्टार्ट स्टडिंग अबाउट, say suppose I start studying about
HDI, Human Development Index. Then, I know that there is an important role of Amartya Sen in understanding Human Development Index, right? He talks about the capability approach. He talks about the difference between wants and needs. तो क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उनका पेपर स्किप करके आप कभी भी एचडीआई को नहीं समझ सकते. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एचडीआई इफ यू स्किप द पेपर ऑफ अमर्त्य सेन, right? Similarly, if whenever you're studying any topic and you go ahead and you find some kind of paper, then it is highly suggested that you go ahead and you read that paper also thoroughly. आप उस पेपर को अच्छे से पढ़ो. हाँ, whenever you find any paper and you quote that in exam, right? That will be very very useful. ठीक है. अब बेटा हम instruments of monetary policy की बात करेंगे. So please write down the first one, which is quantitative instruments. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को हम जनरल इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं, right? Quantitative are those instruments which affect overall volume of credit and money, right? Quantitative instruments are those instruments which can go ahead and which can affect the total amount of money or credit in the economy, ठीक है, without discriminating across सेक्टर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट किए बिना ये बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं कि टोटल मनी एक इकोनॉमी में कितना होगा. दैट इज व्हाई दे आर क्वांटिटेटिव इन नेचर. द सेकंड काइंड ऑफ instruments that we have, that is called as qualitative instruments, and these are also called as selective instruments. Selective माने ये बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर को, राइट? सो दे कैन इन्फ्लुएंस द एलोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, राइट? तो क्वांटिटेटिव जनरल है. आप जब भी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट यू विल यूज दैट, मनी सप्लाई विल इंक्रीज और डिक्रीज जनरली, मतलब किसी एक सेक्टर के लिए नहीं है. क्वालिटेटिव सेलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट. मॉडर्न और हाइब्रिड टूल्स, ठीक है. दिस इज बेसिकली advanced mechanism relevant in liberalized and open economies. So sometimes what happens is कि in the exam जो आपको क्वेश्चन आता है वो पता करने के लिए होता है कि whether you know which instrument can be used in closed economy and which instrument can be used in open economy. So the first two, these two, they can be used in both closed and open. But this one, this can only be used in open economy, right? So this is also a distinguishing factor which you have to be aware about. Okay. Now let us go ahead and today we will talk about quantitative instruments. तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बेसिकली इंक्लूड 1 रेपो रेट,
2, it goes ahead and includes reverse repo rate. 3, it includes your statutory liquidity ratio. 4th, it includes your cash reserve ratio. 5th, open market operations, right? 6th, it includes your bank rate. 7th, it includes your liquidity adjustment facility. 8th, it includes marginal standing facility, right? 9th, it includes your standing deposit facility. Okay. So these are the main quantitative instruments that we have in any economy.